हेलो ऑल सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं आज के इस लाइव पे, इस चैनल पे चरवाक लोकायत पे। और आज का जो टॉपिक है एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट है ये, क्योंकि जो मुझे पता चल रहा है एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट फिर से फट रहा है और वो है खालिस्तान मूवमेंट। तो उस पे एक सीरियस डिस्कशन, एक सीरियस बात जरूर बनती है, क्योंकि at the end of the day it's a matter of integrity of India. बट सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें मैं जो आजकल देख रहा हूँ वो है सिख रेडिकलिज्म। मतलब जिस तरीके से आजकल बहुत सारे सिख्स भी रेडिकल हो रहे हैं और वो भी मतलब रैंडम अटैक्स कर रहे हैं ऑन देयर सपोज्ड बिलीफ सिस्टम। तो ये देख के मेरे को मतलब मेरे से रुका नहीं जाएगा, ये हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग को आज थोड़ा अजीब लगता हो कि मैंने कौन सा टॉपिक चुना है, क्योंकि ज्यादातर मेरे टॉपिक हिंदुइज्म से रिलेटेड होते हैं, क्रिश्चियनिटी से या इस्लाम से रिलेटेड। हेलो, हाँ। तो मैं कंटिन्यू कर रहा था। तो ये एक इम्पोर्टेंट इशू है, और जो भी लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइव को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, इन्फॉर्म करे। ठीक है। तो मतलब अभी भी क्या बोले हम इसको, और इस पे एक सीरियस डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि मतलब जो रेफरेंडम किए जा रहे हैं कनाडा में, इटली में, यूके में और दो तीन और कंट्रीज में, वहां पे अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो देयर विल बी ए ग्रोइंग डिमांड ऑन इंडिया टू सीड द टेरिटरी ऑफ पंजाब। और जो कि दिस इज ए थ्रेट टू इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट एट वन लेवल की हमारा मतलब वो डिमांड होगा कि पंजाब को दे दो, ये सिख अलग है आपसे। बट ऑन अनदर इशू, ऑन अनदर नोट, दैट पाकिस्तान जो है, वहां पे जो मतलब आर्मी है, द आईएसआई है, उनको एक इजी एक्सेस मिल जाएगा इंडिया में। जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग, दैट विल create a much more easier access to the easier access for ISI and the Pakistan military to send their terrorists. Because at this stage, जहां तक मैं देख रहा हूं, I haven't seen a single Khalistani voice stand up against Pakistan. Of course, वो इंडिया के अगेंस्ट तो खड़ा होकर बोल रहा है हमको चाहिए इंडिपेंडेंट, बट नेवर अगेंस्ट पाकिस्तान. So this is a concern. And then the Sikh radicalism, जैसे मैं बता रहा था, रैंडम किलिंग्स पे रैंडम किलिंग्स हो रही है। एंड यू नो यू कैन, हमने देखा था गोल्डन टेम्पल में किसी के हाथ काट दिए गए। रिसेंटली कोई गोल्डन टेम्पल के पास तंबाकू चूरा तो उसको मतलब मार दिया गया। एंड और भी ऐसे केसेस आए हैं जहां पे निहंग सिक्स एक्चुअली टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किलिंग ऑन इवन अ स्मॉलर इशू, लाइक जस्ट ऑन सस्पेक्ट, कि उन्होंने एक आदमी को इसलिए मार दिया कि उन्हें सस्पेक्ट था कि वो किडनैपिंग कर रहा है। सो दिस इज ए राइजिंग रेडिकलिज्म that needs to be discussed and that needs some attention. I do think this is a topic worth discussion. तो इसलिए मैंने लाइव को आज इस टॉपिक पे शुरू किया है। ऑफ कोर्स मैं नेक्स्ट टॉपिक देखूंगा, कोई अच्छा मिलता है इवन रिलेटेड टू हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, वहां पर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, इवन बुद्धिज्म।
कोई अच्छा टॉपिक मिलता है तो वहां पर भी मैं कंटिन्यू करूंगा। और भी है, बहुत सारे टॉपिक है माइंड में, बट फिलहाल आज के लिए मैंने सोचा ये टॉपिक से शुरू किया जाए। एंड स्ट्रीम यार्ड लिंक मैंने पिन किया हुआ है। अगर कोई बात करना, अच्छा जो भी लाइव देख रहे हैं लाइव को शेयर कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो खालिस्तान मूवमेंट एंड सिख रेडिकलिज्म है, तो लाइव को शेयर कीजिए। और स्ट्रीम यार्ड लिंक मैंने पिन किया हुआ है, जो भी लाइव देख रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो कोई हिंट्स है, कोई पॉइंट्स है, या कोई ऐसे इंफॉर्मेशन है जो शेयर करने लायक है वो शेयर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा सपोर्टर है इस मूवमेंट का, सिखिज्म को लेके या खालिस्तान मूवमेंट का, तो वो आए, डिबेट करे, वो बताए कि भाई ये क्यों अच्छी बात है, क्या सही है। ठीक है, वो यहाँ पे आए, डिबेट करे, अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करे। डेफिनेटली ये, दिस इज नॉट समथिंग एक्सपेक्टेड, बट यस, वो आए डिबेट करने के लिए, अगर वो डिफेंड करने पे आते हैं इन सब चीजों को। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो इसको क्लोजली देखा है, या फिर दे वांट टू शेयर समथिंग, सम अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो वो भी वेलकम है। कोई रैंडम चिट चैट करने आता है या इवन मतलब जोक्स कर सकते हैं, या दे आर ऑल्सो वेलकम, बट मैं उनको उतना एंटरटेन नहीं करूंगा आज के इस टॉपिक पे, क्योंकि आज ये थोड़ा सीरियस टॉपिक है। ऑफ कोर्स मैं यूजुअली जहां तक रिलीजन पे बात करता हूँ, तो आज क्योंकि सुपरस्टिशन है, एंड उस पे मैं खैर थोड़ा बहुत इधर उधर मैं जोक्स अलाउ करता हूँ, बट दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक सेफ्टी, इसलिए मैं कंसर्न हूँ, इस रीजन से, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं उतना शायद एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा जोक्स को यहाँ पे, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव मैटर है। इसके वजह से बहुत सारे लोगों के लाइफ गए हैं। ऑफ कोर्स सुपरस्टिशन की वजह से भी, जो बाकी रिलीजन्स में उनकी वजह से भी लाइफ गई है, टेररिज्म की वजह से भी लाइफ गई है, दैट्स ऑल्सो ए सीरियस टॉपिक। बट हैविंग सेड दैट, उसका रिलीजियस आइडियोलॉजी और उसका जो फाउंडेशन ही है वो ऐसा खराब है कि वो मजाक बनने ही लायक है। मैं इतना ही बोलता हूँ। ठीक है, इट्स वर्थ मेकिंग फन ऑफ। ओके, जिसका वो एक मतलब जो कॉन्सेप्ट है रिलीजियस डॉगमा, वो होते ही ऐसे कि भाई उसका मजाक बना दिया जा सकता है। बट यहाँ पे इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ जस्ट अ बिलीफ। इवन तो सिखिज्म में भी वही डॉगमा है। आई मीन, री इनकारनेशन है, एक आत्मा की थियरी है, गॉड का क्रिएटर कॉन्सेप्ट है, और वो सारी चीजें हैं। बट एट द सेम टाइम, व्हाट्स द रियल कंसर्निंग इज कि the total apathy of, Indian politician and even intellectual to even remain silent or even silently back this type of thing. Okay, I guess even जब कश्मीरी पंडित पे हुआ तो इतना साइलेंस नहीं था। आई मीन, even people from some of the oppositions did raise their concern when जब कश्मीरी पंडित पे हुआ था and related stuff, there were people, there were faces, but here that's not the case. यहाँ पे कोई faces नहीं, कोई people नहीं है जो एक बार उठ के एक बार इस चीज को रेस कर सके, either in parliament or in, uh, assembly. But anyhow, मेरा आज का टॉपिक ये है। और जो लाइव देख रहे लाइव को शेयर करे, ज्वाइन करे। ठीक है, वो आए और बताए क्या उनको लगता है इस टॉपिक पे। आई वांट एन ओपन डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, और एक सीरियस नोट पे ही सही। ठीक है, तो जो लाइव को देख रहे हैं वो लाइव को शेयर भी करें। चैनल अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जरूर। और स्ट्रीम यार्ड लिंक मैंने पिन किया हुआ है। एवरी जो डिबेट करने चाहते हैं वो भी वेलकम, जो इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं वो भी वेलकम है। ठीक है, बट बिफोर समबडी जॉइंस, मैं कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। सेकेंड, तो ये जरा देखिएगा, यहाँ पे ये न्यूज पढ़िएगा।
तो यहाँ पे लिखा है खालिस्तान रेफरेंडम इन कनाडा, ऑल यू नीड टू नो। मतलब वहां पे आजकल कनाडा में रेफरेंडम चल रहा है और जियो पॉलिटिकली इट्स ए कंसर्निंग इशू मैं देखता हूँ, जी फ्रॉम जियो पॉलिटिकल परस्पेक्टिव। ठीक है, ये कनाडा में हो रहा है। जस्टिन ट्रूडो व्हाट ही वांट्स टू प्रूव ही हैज प्रूवन कि वो किसका साइड ले रहा है, एंड प्रोबेबली ही हैज अ पॉलिटिकल एम्बिशन, सो ही इज गोइंग टू दैट। तो खालिस्तान रेफरेंडम इन कनाडा, ऑल यू नीड टू नो, ये है। और ये और नहीं, और भी न्यूज़ है, देयर आर सम अदर न्यूज़ व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर हियर। ठीक है का? अच्छा, ये देखिएगा। तो यहाँ पे ये एक और न्यूज़ है, एंड दिस इज अ वेरी ट्रू न्यूज़। ठीक है, ये स्क्रॉल डॉट इन का है, एंड इट सेज पाकिस्तान ISI is working to revive the Khalistan cause. India must be vigilant. That's true. ये ISI agent है, because there has not been any single word on the concern from the side of Pakistan. I mean, जो people who support this Khalistan movement or who think they make Khalistan, okay. Uh, so the first thing question is, do you think Pakistan is going to leave you off? Let's take for a practical कि सपोज इन लोगों ने इनका जो भी ड्रीम स्टेट है वो बन भी गया, ऑफ कोर्स दैट्स अ यूटोपियन थिंग, बट स्टिल ये बना भी ले रहे हैं। डू यू थिंक पाकिस्तान इज गोना जस्ट सिट आउट देयर एंड साइलेंटली एंड मेक एन इंडिपेंडेंट स्टेट and at the same time not invade that state? So do people who advocate for the creation of Khalistan, do they have any idea about कि भाई अगर हम स्टेट बना लेंगे तो हम उसको डिफेंड कैसे करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स? उसे डिफेंड कैसे करोगे आप? डू यू हैव द आर्मी, डू यू हैव द इंटेलिजेंस टू कवर अप दैट? दैट्स द नंबर वन क्वेश्चन. Number two question, Pakistan attacks Khalistan, their so-called utopian state, okay? Do you think they're going to leave the Sikhs off? I mean, 1947 का जब पार्टीशन हुआ, वहां पे गुरुद्वारा को नहीं छोड़ा, वहां के सिख्स को नहीं छोड़ा, ये खाक क्या ये पाके खालिस्तानी को छोड़ देंगे? छोड़ देंगे इनको? Will the military of Pakistan leave them? No, they will sure go for a genocide, और वो बोलेंगे भैया आप इस्लाम कबूल कर लो, आप अपना दाढ़ी फेंको, आप अपना कृपाण पंच के जो है निकाल के फेंको, आप इस्लाम कबूल करो या फिर आप मार खाओ। मतलब genocide, face the genocide. They are going to do that. So the main question is, in that situation, अभी जो खालिस्तान है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो किसके सामने गिड़गिड़ाएंगे? Whose help will they take? और आर यू रियली श्योर कि आपके पास वो सारे मतलब मटेरियल्स एंड रिसोर्सेस है टू फेस दैट थिंग? देयर आर सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एंड ये क्वेश्चंस में खालिस्तानी जो मूवमेंट के सपोर्टर है उन पे फेंक रहा हूं, ऑन देयर सो कॉल्ड यूटोपियन आइडिया ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, उन पे मैं ये सवाल फेंक रहा हूं। एंड यू सी आई मीन, जितने मैं अभी तक पोस्टर देख रहा हूं, दे सी इंडिया एज अ थ्रेट, ओके? लेट्स से what will you do if Pakistan turns out to be a threat? Pakistan is just waiting, वो वेट कर रहा है, ISI is waiting कि भाई कब ये नया स्टेट बना ले, and the moment they make it, they're going to come hard at you, Pakistan. At that stage, don't you think Pakistan becomes a threat to your supposed utopian state? तब आप किसका हेल्प लोगे? और आर यू so sure and confident that you are going to beat the hell out of the Pakistan army and the ISI? There are problems here, right? So जो खालिस्तान को सपोर्ट करते वो आए, डिबेट करने आए, मैं इनके सामने ये सवाल रखूंगा। एंड
Though so far what I have seen, Khalistan ke log, they see India as a threat, but they don't see Pakistan as a threat. Because technically speaking, a Sikh is neither a completely Muslim nor a completely Hindu. Hindu in the sense पौराणिक हिंदू, वो मतलब वो मूर्ति पूजा वगैरह तो नहीं मानते हैं. कंप्लीटली मुस्लिम भी नहीं, क्योंकि वो अल्लाह का नाम नहीं ले रहे हैं. एंड दे बिलीव इन रीइंकारनेशन. उनका कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकारनेशन एंड कर्मा है. ठीक है, तो वो वहां पर अन इस्लामिक है उस एरिया में. सो यू नो वेयर डू दे स्टैंड अ चांस? कहाँ पे आप टिकोगे जो सपोर्ट कर रहे खालिस्तान का झंडा उठा के? यू नो, यू आर गोइंग अराउंड and supporting it in UK, in Canada, in various other places. Where do you stand a chance? And how can you ignore Pakistan as a threat? Pakistan is just an opportunist. वो opportunity ढूंढ रहा है. Anytime they can do anything. A friend can become a foe, and vice versa. You never know in politics, in geopolitics, that's a case. But अभी आप अगर पाकिस्तान को फ्रेंड बनो, you don't even take a second to change their mind and you जेनोसाइड करने और वो इस्लामिक किताब को दिखा के अल्लाह अकबर करवाने में एक सेकंड नहीं लगेगा. द मोमेंट इट्स डिक्लेयर्ड सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट, बिकॉज देयर इज जस्ट वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी. तो प्रॉब्लम है भाई यहाँ पे. एंड इट सीम्स लाइक ए वेरी क्लेवर स्ट्रैटेजी टू प्ले इनिशियली. जो वहां के हो, इट लुक्स लाइक कि भाई धीरे धीरे इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर लो और बाद में एक एक करके उस एरिया को ऑक्यूपाई कर लो और बाद में कंट्रोल में ला दो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के अंडर. आई थिंक दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक एट द एंड ऑफ द डे. बट द पीपल हु आर सपोर्टिंग इट, डू दे हैव द ब्रेन्स टू इवन थिंक ऑन दीज टर्म्स? डू दे हैव द ब्रेन्स? आपके पास दिमाग है ये सोचने के लिए? सो इट्स आई होप people come out, and I hope that people share this live. People who support Khalistan, they are welcome to debate here and try and prove me wrong. It's a toxic evil king like the Khalistani. Okay, yeah, okay. So let me share another recent development. Okay, yeah. So recently there have been Sikh representatives in the foreign countries, and here is one of their namuna. Okay. Okay, so this is Sunday Guardian Live. Okay, they have this article: tutored ISI Guru Patwant Pannum fools Interpol. Interpol is looking after this person who is just parroting what ISI supposedly taught him. So Interpol is looking this guy, जिसका मैं अभी शेयर कर रहा हूँ. And whoever is watching this live, please share and invite more people to join this discussion, have their input, or if somebody is supporter of this so-called Khalistani movement, come and defend your BS, to put it straight. So he is ISI person which is looked by Interpol. Guru Patwant Pannum. I mean, whatever his name, but he is an ISI agent, and Interpol is looking after him, folks. This is serious. Now, of course, I'm not saying all Sikhs are Khalistani. I'm just talking about supporters. There is specific group. I guess I still think that most Sikhs are very good people and loyal with India, though they may have differences with other people and other sects. That's fine. Under Indian constitution, that's perfectly fine. But most of them are pro India, and they are very much want to be
connected to India. I do think that most of them are definitely, but so please don't take it as a blanket term. I'm not saying this to all Sikhs, but there is a specific group, a specific cabal which I'm talking about, which runs its ideology on this movement, on Khalistan. Okay, it's specifically for that cabal, for that particular group, not all Sikhs. Okay, I hope people get that. Okay, so let me continue another. So 1 second. This is another latest news. I mean, these are there is another referendum happening right now in Italy. Let me share that news. एंड गाइस, दो लोग जो भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, लाइव को थोड़ा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ. ओके, वन सेकंड. ओके, यहाँ पे सो व्हीकल मेन 1 second. यहाँ व्हीकल चालू है. One second. Khalistan. One second. Okay, this is a recent news back in August. Okay, of course, this happened in UK. Okay, I don't know what action was exactly taken, but anyhow, let me share this. UK yet to act on Indian correspondence over pro Khalistan event in London. I mean, it's like अपना अपना झुंड बना रखे हैं एक एक जगह पे और हम लोग एक्ट कर रहे हैं. So again, this is another recent news this year. And yet, one more second. Uh, one second. Uh, so this is about you can check on internet Khalistan referendum and you will get plenty and plenty of news articles. I'm not able to share, but these are some of the things which is happening. Let me share another one if I have.
1 second. Okay, this is from the January of this year. Okay, so check this news. Look at this. So at least 9 key pro-Khalistan elements operating from Germany, says probe agencies. Again, this is another serious thing which is really happening. This is in Germany, and this was a news back in January, though I'm sharing it now, but still, I guess it's relevant in today's live and today's talk. Let me share another. So this was all about Khalistan. I mean, they're operating from Canada, Italy, UK, and different places, and trying to kind of get attention towards this. But I personally don't think most of the Sikhs support this. I personally hope that's not the case. Most of the Sikhs, okay. However, parallelly there is another thing which is going on. I mean, I don't see Khalistan movement or Sikh radicalism as a different thing. They are interrelated. One feeds the other. Khalistan movement feeds the Sikh radicalism, and Sikh radicalism in turn feeds the Khalistan movement. I don't see any difference. So यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा about Nihang Sikhs, the ultra radical, and even call it whatever you like, but they don't sound to be of 21st century. Definitely not. तो मैं निहांग पे चर्चा करूंगा कि उन लोगों ने क्या क्राइम्स किए हैं, and it's just not like one or two. There are a couple of them. Okay, this has been happening in recently, and there has been a growing trend in this area, जो कि एक concern है. And I hope government and the people work together to resolve this issue. That's my best hope. But I find it's important to highlight this. मुझे लगता है ये चीजें हाईलाइट होनी चाहिए और लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए मेरे इस चैनल के जरिए. और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है वो इस लाइव को शेयर करें और वो इस चीज को भी शेयर करें. ठीक है. आई डेफिनेटली आई एम नॉट एनी बायस्ड चैनल. अगर किसी को लगता है कि मैं कोई बायस्ड हूँ, आई एम नॉट बायस्ड. मैं हर रिलीजन और जो सोसाइटी के जो जनरल बातें हैं उसको लेके मैं अपना ओपिनियन रखता ही हूँ. और as far as religion goes, I have been very critical. Let's put it that way. मतलब मेरे हर वीडियो में मतलब किसी न किसी रिलीजन को पकड़ता हूँ. ज्यादातर मोस्टली इट्स हिंदुइज्म, इस्लाम, फॉर दैट मैटर. बट ऑफ कोर्स दिस इज अनदर इशू. सिखिज्म ये एक इशू है. यूजुअली होता यह है कि व्हेन वी डिस्कस ऑन से इस्लाम और हिंदुइज्म, जब हम हिंदुइज्म इस्लाम को लेके डिस्कस कर रहे होते हैं, वी कंप्लीटली काइंड ऑफ बिकम फॉरगेट दिस इशू. माइंड से गायब हो जाता है अबाउट सिख रेडिकलिज्म और खालिस्तान. बट आई फाइंड दैट इट्स टॉपिक वर्थ डिस्कसिंग, वर्थ ब्रिंगिंग इट अप हियर. देयर नीड्स टू बी सम अटेंशन ऑन दिस. तो जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, लाइव को शेयर करें. लाइव आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो भाई एटलीस्ट, ताकि आपको ऐसे ही लाइव सुनने को मिलेगा. तो मैं एक और चीज शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे. दिस इज रिगार्डिंग द निहांग सिक्स. तो ये देखिए, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ब्रुटैलिटी.
nothing short of it. Let's put it that way, okay? And this is nothing short of a terrorism either. ये भी एक तरह का ये भी terrorism ही है. Let's put it that way. And this is from Ludhiana, and this is recently, few months back, this year. So Nihang's torture man to death on suspicion of kidnapping a girl. Police के पास तो जाते भाई. You could have gone to police. You could have gone to authority and talked to them and told them that we suspect this, please find. पुलिस उसकी धुलाई कर देता. आप धुलाई करने के चक्कर में उसको ऊपर मतलब क्या बोले मार ही डाला उसको वहीं पे. You not only finished his life, but you probably also finished his family's hopes. That's what you did. And it's not just one Nihang who did. अगर आप ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ोगे तो there were totally 9 Nihangs who actually did that, and they were all booked and arrested recently. फिर नेक्स्ट मैं दिखाना चाहता हूँ ये again, this is clear cut a form of terrorism, a radicalism on the rise. Okay, तो ये न्यूज़ भी पढ़ लीजिए जरा. So, man killed by 2 Nihang Sikh men over chewing tobacco near Golden Temple in Amritsar. I mean, okay, somebody, he probably usko pata nahi. Let's put it that way. Most Indians और हम लोग जिस तरह से है हम लोग उतना इन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं. अच्छा, नवीन कुमार लिख रहे हैं हेलो सर. ओके, हेलो नवीन. तो इंडिया में वैसे भी बहुत लोग जब पान खाते हैं तो दे हैव नो आइडिया दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रोड एंड वी शुड प्रोबेबली नॉट स्पिट. ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है एंड दे कंटिन्यू दैट्स कॉमन थिंग इन इंडिया. बट killing someone for that, what level of I would call intolerance and inhumanity is this? अच्छा, नवीन कुमार लिख रहे हैं कोलैब विद साइंस जर्नी. ओके, आई विल चेक आउट. मेसी लिख रहे हैं हेलो सर जी. हेलो मेसी, बहुत दिन बाद आए हो. वेलकम ब्रो, वेलकम. तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर 2 निहांग सिख ने कब करोगे. देखिए उनका रिप्लाई नहीं आ रहा है तो हम क्या करें. जस्ट वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई. रिप्लाई नहीं आ रहा है उनका. तो 2 निहंग सिख ने एक आदमी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो टोबैको चबा रहा था. दिस इज द डमेस्ट रीजन फॉर विच यू कैन इवन किल अ पर्सन. हो सकता है आप उसको समझा सकते थे या उसको दूर कर सकते थे और you could have complained to a nearby police authority and probably they would have taken care of him. But no, you went there and you killed him because you're a terrorist. जिसने वो काम किया वो टेररिस्ट था, क्रिमिनल है, वो मर्डरर है, इसलिए वो किया. Not because they just wanted to protect their so-called sacred thing, but they did it out of hatred here. ठीक है. And I hope people are watching this to understand. And let me share another. There are many of them. Okay, so this was on
एंड दिस वाज लास्ट ईयर, ये चीज लास्ट ईयर हुआ था एंड दिस वाज देयर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम इन द न्यूज। ठीक है, बट अच्छा, हेलो सर जी लिखा, ये लिख रहे कब करोगे। अच्छा, ये मैं थोड़ा बाहर था। ओके ओके ओके। सौरभ पांडे इज राइटिंग हेलो एवरीवन। ओके, हेलो सौरभ। करण चलो भाई, अगर हिंदू मंदिर में ऑनियन पे क्यों पाबंदी है? एक्चुअल में ऑनियन इज एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ, स्पेशली अगर किसी को डायबिटीज वगैरह है तो ऑनियन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। जहां तक मैंने समझ पाया, जितना मैंने उस पर जान पाया है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ओके, आई गेस, आई डोंट नो, इट्स जस्ट अ डॉगमा एट द एंड ऑफ द डे। इट्स अ डॉगमा। मेसी इज राइटिंग हेलो ब्रो, ये लिख रहे हेलो। ओके ओके, चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट। तो ये देखिए, ये लास्ट ईयर हुआ था। अगेन आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स नो दिस, बट ये है इंडियन न्यूज में है ये। ऑल थ्री अक्यूज्ड इन सिंगो बॉर्डर किलिंग सेंट टू, हाँ, सिंगो बॉर्डर में वो किसी का हाथ काट दिया और किलिंग हो गया था, वो चीज है। अच्छा, ये पूछे व्हाई इट्स नॉट अलाउड। ओके, देयर इज अ स्क्रिप्चरल थिंग। इसका एग्जैक्ट स्क्रिप्चर मेरे को याद नहीं, बट मैंने इसको शायद आई थिंक पढ़ा था भागवत पुराण में, या फिर हाँ, आई थिंक मोस्टली भागवत पुराण में। देर इज ए चैप्टर ऑन फिफ्थ बुक के एक चैप्टर में नारद जो है युधिष्ठिर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है ऑन हाउ ए किंग शुड रूल एंड व्हाट दे शुड ईट एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, तो वहां पे ये चीजें है कि जो ऑनियन है, लहसुन है, ये आर दे आर क्लासिफाइड एज तामसिक फूड। Okay, I mean, this is something found like that, tamasic food. This is common in like Vaishnavite temples. Okay, अगर कोई भगवान विष्णु का मंदिर वंदिर है तो वहां पे ये इट्स समथिंग कॉमन। ओके, एंड इवन इफ यू लुक एट से स्वामीनारायण संप्रदाय, उन्होंने जो चीजें लिखी है, इवन दे हैव दिस रूल दैट यू शुड अवॉइड ऑनियन एंड यू नो दोस थिंग्स। ओके, लहसुन वगैरह वो अवॉइड करो और वो सब चीजें हैं। ओके, सो या गार्लिक दैट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे आर क्लासिफाइड एज तामसिक फूड। ओके, और एक और बुक है जैसे फॉर एग्जांपल शनि महात्म्य बुक, उसमें इट्स एसोसिएटेड दैट ऑनियन एंड गार्लिक ग्रो बिकॉज ऑफ राहुस व्हेन हिज हेड वाज सेवर्ड, हिज अमृत, उसके जो गले से जो अमृत है वो गिरा। ठीक है, तो वो उसकी धरती में गिरने की वजह से ऑनियन और गार्लिक ग्रो होने लगे। और जब ऑनियन और गार्लिक ग्रो हुए तो देर वॉज वो, मतलब कहानी में कहा गया कि वो क्या बोलते हैं, वो आपका तामसिक गुण, राहु के गुण जो है आपके अंदर आ जाएंगे। आई मीन, दिस आर जस्ट शिबोलेट्स, बट दैट्स हाउ इट इज। डॉगमा है एंड आई वुड सजेस्ट कि भाई, मैं तो बोलता हूँ जितने हिंदू मंदिर में खाना वगैरह बनते भी है उसमें ऑनियन डालो, गार्लिक डालो, कुछ नहीं होने वाला है। इनफैक्ट इट्स बेटर फॉर योर हेल्थ, स्पेशली अगर आप ओबीस हो, डायबिटिक हो, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, देर आर मोर हेल्थ बेनिफिट्स फॉर इट। अच्छा, ये लिख रहे वो WTF फेक न्यूज। भाई कौन सा फेक न्यूज है, कौन सा फेक न्यूज है भाई, आप जरा बताइए भाई। हम तो भाई वो सारे न्यूज ही शेयर कर रहे हैं जो कंफर्म्ड है भाई। ठीक है, ये फेक न्यूज बोल रहे, कोई आए फेक न्यूज से तो भाई डिफेंड करने आए भाई, डिबेट करने। तो one second.
So if somebody wants to know more about Nihang Sikhs, they can also check this article. Yeah. Report who are Nihang Sikhs, what makes them different from other Sikhs. Okay. So Nihang Sikhs are the ultra conservative and ultra radical. Why Indian people have hate for Sikh separate? No, we don't have hate. We see Sikhs also as part of India. Okay, they are part of India only. Okay. आप यहाँ पे कमेंट करने के बजाय आप यहाँ पे आइए, डिबेट कीजिए, ठीक है. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो काम कर रहा है, यू हाउ हाउ इज इंडियन पीपल रिस्पॉन्सिबल? Government is having a bad attitude doesn't necessarily mean all Indians start to hate Sikhs. No, that's not the case. Okay, I mean, that's not the case, really. You have a problem with government, yeah, okay, maybe even I too have many disagreements and many things which I like to criticize about the government, but इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम लोग उसके लिए सेपरेट सा कुछ बना ले. Okay, there is a thin line, a difference which needs to be understood between criticism and an outright demand for something else. So this is a demand, okay. अगर आपको कुछ बोलना है, अगर आपको डिबेट करना है, और you want to share something, please, you're welcome to join the live. I mean, as I said, मैं स्कूल में we had a pledge that all Indians are my brothers and sisters, right? तो I StreamYard link दिया है मैंने. Click on this link and join. I'll definitely take you in the studio. You are no, I'm not in favor of Khalistan because पाकिस्तान के आर्मी को एक सेकंड नहीं लगेगा वो आपकी स्टेट को ऑक्यूपाई करने में, अगर आप खालिस्तान को सपोर्ट करोगे तो. It's impractical to put it. Okay, it's impractical. अगर आप स्टेट बनाओगे तो what does a state require? State is not just like ethnicity and language. Yeah, it's there, ethnicity hai, language hai, culture hai, okay, fine, but what else? You need an army, you need resource, you need an intelligence and militia. Do you have that? No, that's not sufficient to stand against ISI and Pakistan army. तब आपको इंडिया के डोर खटखटाने ही पड़ेंगे. You will have to hit open the door of India. No, you don't have. No, absolutely no. You आप समझ नहीं रहे. खालिस्तान is it's using ISI is using this as a puppet. Okay, puppet. The moment you are declared independent, ISI they're going to come hard at you. उनको उनको फर्क नहीं पड़ेगा. एंड वो मतलब वही चीजें करेंगे जो मतलब क्या बोलते हैं वो सुल्तनत मदीना जो रसूल ने किया था, रसूल अल्लाह ने मदीना, वो वही करेंगे आपके साथ भी. 1947 partition, lakhs and lakhs of Sikhs were killed, brutally murdered. वहां पाकिस्तान में देख लो कितने गुरुद्वारे हैं वहां पे. Gurudwaras destroyed. India is one you can, okay, in this matter India ट्रस्ट करेगा. पाकिस्तान रंग बदलू है, रंग बदलता है भैया. बांग्लादेश still trusts India to a great extent, even though we have a
many things which are not right, but still Bangladesh trusts Indian government, in terms of geopolitics. पाकिस्तान ऐसा नहीं है भाई, वो सॉरी आप मजाक मत लो, बट इट्स अ सीरियस इशू. आपको इफ यू वांट टू टॉक, कम एंड टॉक हियर, प्लीज डोंट राइट हियर इन द कमेंट सेक्शन. आपको कुछ बोलना है यहाँ आके बोलो. कमेंट सेक्शन में आप बके जा रहे हो तो मैं क्या करूं भाई. सो नो, no, in India we are attacked by tanks. Hang on, who is saying we are attacked? Are you attacked by the tank? करण चल, मुझे तुम बताओ, आर यू अटैक्ड बाय द टैंक? तुम पर कोई अटैक हुआ है क्या? तुमको तुम पर कोई अटैक हुआ है? प्लीज टेल मी. अच्छा, वो बोल रहे नो आई एम अनएबल टू टॉक. ओके फाइन, योर विश. See, okay, fine. This is we and okay, fine. Criticism of government is fine. I think fair. Criticism को मैं support करूँगा of government, but not at the cost of demanding a separate state, a completely separate state. Okay, आप criticize करो, we will stand. Government मतलब आप कैसा जो करे, okay, fine, they did wrong thing and every right to criticize, raise your human rights issues, fine, that's okay, that's totally fine, but not at the cost of creating another state, not at the cost of beheading and killing any random person on a random suspicion. जो इस मैंने दिखाया है, आप इसको क्या बोलोगे? What will you say about this? What will you say of this? What will you say about this? What will you say about this? Does it make sense? So यहाँ पे killings चल रही है and और आप do you think it's right to defend? Every right to criticize government. You can be like a writer, you can be like an intellectual, fine, that's totally okay, but question is, do you really support that killing? That's my question. Do you support those killings? That's my first question. I know you may not have done that personally, but I'm just asking, do you really support that? At that time, Sikh didn't want separate state. If anybody try to destroy our boy, we'll kill them like. What? I mean, अरे भाई मैं तो यार, how are you different from an Islamic fundamentalist? How are you different from a certain se juda camp? Please explain me. यार, this is ridiculous. I don't believe any guru, and there is no necessity of gurudom in India. India's biggest problem is gurudom. गुरुवाद को खत्म करो भाई, कोई गुरु वुरु नहीं चाहिए हमें. We don't need any guru. We have enough capability to educate ourselves and think about ourselves. We don't need any personal guru as such. But yeah, you are saying anybody try to again disrespect. What do you mean by disrespect? Is somebody criticizing Guru Granth Sahib is a matlab disrespect? Is somebody random person who on suspicion is killed because he was supposedly kidnapping someone, is that disrespect towards Guru? Somebody chewing tobacco unknowingly, is that a disrespect towards Guru? What do you define
as disrespect. It's open to interpretation. एलसी सिक्स तो ईसाई बन रहे हैं, ये सिर्फ जाटों को चाहिए. या आई अग्री, that's one possibility. In fact, there is a recent news which I would like to share here. Yes, again, you have a police. There is a law and order, folks. Why do you take the law into your hand? आप पुलिस को जाके कंप्लेंट करो, कोर्ट उसको पकड़ के पुलिस को सौंप दो, and you go and file a case in court, or you know, complain to police. There is law and order, there is a way. Of course, this is not a thing which I even say to even Sikhs, but this is a thing which I will say to even Hindus and Muslims and Christians. You don't take the law into your own hand. मैंने गौ माता पे भी पिछले लाइव किए थे, जहां पे मैंने लिंचिंग्स पे डिस्कशन की थी. स्टॉप टेकिंग लॉ इनटू योर ओन हैंड एंड गो टू पुलिस, गो टू कोर्ट. देयर इज अ सिस्टम. ओके. Yes, in our religious places they okay, that doesn't make any sense. I mean, कोई you it's open to interpretation. आप चाहोगे तो किसी को भी बोल दोगे. You can say, suppose a radical person can say anything he wants in the name of so and so, and misrepresent it, and then keep it open to interpretation and use that as a tool to attack someone. Same thing which we discussed with other group like Islamic fundamentalists, and even some Hindutva groups, and there are Christian radicals in West. We discussed that. How are you different here, folks? Again, there is no logic in your point. Anybody, okay, if I want to do something to someone, मैं उसको frame कर दूंगा and I bring some mob behind me. What is that? Anybody can do that. How are you different? How is that humanistic? क्या human values आपने सीखे? What is the human values you learnt? There are different laws for Sikhs and Hindu. Yeah, and okay, within Indian constitution, because there are many religious groups, yes, certain accommodations are given for each group. That's for that time that was considered and fine, but we don't know in today's time how it goes. But yeah, it's there. But you again, taking law into your hand is not the solution to the problem. In fact, it's aggravating the problem. It's making it worse. We didn't believe in Indian judiciary. I mean, again, what can I say further? I mean, here you are no different from an Islamic fundamentalist. Your talks are no different from a radical Hindutva group or a radical Islamic fundamentalist or a radical Christian group. No different. Bullshit logic with same language. There's nothing else. Let me see. Let me.
Okay, so this is the status of Christianity. Okay. Okay, yeah, here I have to on your point of Ram Rahim, I agree. Okay, Ram Rahim definitely doesn't deserve bail, and uh, this is total bullshit, and he should be put into jail. मैं इस पे भी कभी लाइव करूंगा, राम रहीम पे भी, और इसके जो भी कारनामे हैं या कांड है वगैरह वगैरह. Actually, he doesn't deserve to be in public. उसको भी जेल में डालना चाहिए, and people should demand that. Definitely, I agree with your point of Ram Rahim, but as far as Sikh prisoner, I mean, जो क्राइम क्या है वो जा रहा है भाई जेल में. And Ram Rahim is also a criminal. He should be in jail. And this is where the government is getting it totally wrong. मतलब वो हरियाणा में अपना वोट बैंक बचाने के लिए उसको वापस छोड़ रहे हैं. Indian government is getting it wrong here completely. See, the they have they have been given punishment, and जो राहुल गांधी थे आप उनसे जाके पूछिए, मुझसे मत पूछिएगा. उन्होंने क्लेम किया कि हमने उनको माफ कर दिया वगैरह वगैरह. आई डोंट नो. ओके, इंडियन मीडिया में बहुत सारी हिपोक्रेसी है, वो क्या है. आई डू अग्री देयर इज बायस एंड हिपोक्रेसी, बट दैट इज नॉट that is that is no way a justification for what the Nihangs did, and no way a justification for Khalistan. All your criticism is fine, and I do agree with your fair criticism. Government ki taraf, it's fine, totally agreed, but Khalistan and Nihang radicalism is not the way to go. Just get this part. Just get this. Okay. Okay, fine. Indian media, most of it, yeah, Godi media, yeah, maybe let's put it, yeah, Godi media, fine. But uh, again, that's not a justification for a new state of Khalistan and killing of any random person by framing them, or you know, in quote unquote whatever so and so name. That's no way a justification. Okay, very pleased to talk with you. Bye. Okay, fine. तो इनका चलेगा. And anybody else who wants to join the live and share their input or share their point, they are very much welcome. StreamYard link is pinned. कोई उस StreamYard link को क्लिक करो, ठकाठक आओ और हम करते हैं बातें. जो पॉलिटिकल पार्टी अभी तक खालिस्तान को सपोर्ट करता था, वो भी किसान आंदोलन से पहले बीजेपी के साथ. या वेरी वैलिड पॉइंट. या Shiromani Akali Dal, yeah, it's pro Khalistan party, and they were with BJP in the NDA till the farmers' protest erupted. That's true. That's a valid point. Again, these questions also need to be raised at Shiromani Akali Dal on why they were hell-bent on supporting BJP and its NDA alliance politically. Okay, anybody else there who wants to talk on this issue? I mean, this is, I guess, at the end of the day, I can classify it as a political or a geopolitical talk. But anyhow, I think this is a discussion that needs to have some attention. We need
to pay attention to this actually. Yeah. तो या और मेसी और कोई बातें हैं भाई, बताओ भाई। हाँ, वो कोई जर्नी तो आजकल नहीं देखता भाई, जर्नी और बाकी जर्नी चल रहा है हमारा बहुत सारा। तो कोई अच्छे जर्नी को पकड़ना है और जाना है। लाइफ इज अ जर्नी। ठीक है। तो मेसी का पॉइंट वैलिड था। व्हाट एल्स वाज वैलिड? ओके, एनीबॉडी एल्स कमिंग टू लाइव? उसी जर्नी पे हूँ। लाइफ इज अ जर्नी पे ही रहो भाई। ठीक है, बाकी जर्नी आते रहेंगे टाइम टाइम पे। ओके, कोई और है लाइव जो ज्वाइन करना चाहता है एंड वांट टू शेयर देयर व्यूज और व्यू पॉइंट? एनीबॉडी एल्स दे वांट टू शेयर? हाँ, एक लाइव तो मैं सोच रहा हूँ ईडब्ल्यूएस कोटा पे भी होना चाहिए आई थिंक। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया, आई पर्सनली हैव टू डिसएग्री विथ इट। It's kind of subverting the reservation system, which was originally meant for socially discriminated groups. Originally meant for that, but um, in the name of economically weaker section, this is kind of subverting it. So yeah, uh, it's worth having a discussion on this topic. Next live शायद मैं इसी topic पे रखूंगा mostly. Okay, अगर कोई और topic ना रहा तो. Okay. If there are no other topic, I think I will keep a live on this issue, which is worth discussing. Yeah. तो और कोई है जो आना चाहता है, लाइव में बात करना चाहता है भाई? लाइव का तो मैंने तब से स्ट्रीम यार्ड लिंक पिन किया हुआ है। आई हैव पिन द स्ट्रीम यार्ड लिंक, प्लीज कम एंड टॉक। जिनको बातें करनी है, जिनको लगता है कि वो मतलब सही है, खालिस्तान मूवमेंट डिबेट करना चाहते, वो आए। किसी को लगता है कि भाई मेरा पॉइंट में दम है और मुझसे कुछ और बातें शेयर करनी है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, दे आर वेलकम टू, दे आर ऑल्सो वेलकम। या एनी ओपिनियन अराउंड दिस इज वेलकम ऑन दिस टॉपिक। अगर नहीं तो भाई मैं लाइव को आई थिंक क्लोज करूंगा अभी। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है ऑलरेडी। इट इज ऑलरेडी 1 hour ओवर। या okay, so you will find most of the links in the description. Do check it out. Okay, bye and have a good night.